सत श्री अकाल, you all are watching me at पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल इफ यू आर अ 90s किड तो आज का इंटरव्यू आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखिए जो हमारे साथ है ना, उनको मैं शहर की लड़की कहूं या तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कहूं, वो 90s के टाइम से अपनी अखियों से गोली चलाती आ रही हैं और अभी भी वो वही कर रही हैं सबके साथ। यस, आई एम mesmerized and I'm obsessed with her, and of course the very versatile and talented filmmaker who is with us right now. I think उन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी जब लिखी होगी ना, तभी डिसाइड कर लिया होगा कि ये एक ख्वाहिश है, ये मेरी टिक लिस्ट में होना ही चाहिए कि रवीना टंडन के साथ मुझको काम करना है। Yes, I'm talking about the very gorgeous Raveena Tandon and very pretty and gorgeous and talented Ruchi Narain, who is with us right now. Both of you looking stunning, gorgeous, two beautiful ladies on Punjab Kesari Navodaya Times. Welcome to the show. Thank you so much, Namita, and we can say the same for you. Oh, thank you so much. Thank you. This means a lot coming from you both. Well, मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको आपके 90s में ले जाऊं एक बार। तो एक आपका बड़ा प्यारा सा गाना है, वो हम तीनों को गुनगुनाना है। To get that energy back, I know आप बहुत लंबे वक्त से इंटरव्यूज कर रहे हैं। Okay. We need to mix something. So मैं थोड़ा सा कोरस दूंगी, फिर आपको स्टार्ट करना है। जी। You have to guess. जी। ला 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 ला, है ना? ला 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 ला। आई नो मैं बहुत बेसुरी हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। हम गाने लगेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। ना बिल्कुल भी नहीं, पत्थर के फूल का ही गाना है, बड़ा प्यारा फिल्म था। सो इट्स लाइक कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। That's right. जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, कर्मा कॉलिंग का फ्यूचर तेरे हाथों में छोड़ा है। मैम के लिए एक बार फिर से, कभी तू नूरी लगती है, कभी तू जूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बॉबी लगती है। एंड आज वो बहुत ही गॉर्जस परी जैसी लग रही हैं आप दोनों ही। वेल, मेरा पहला सवाल, जब 90s में आपके लिए फिल्में बनती होंगी ना, आपकी फिल्मों के गाने इतने आइकॉनिक हुआ करते थे, उसमें हम एक तो आपको देखते रहते थे, योर एक्सप्रेशंस, योर स्टाइल, एवरीथिंग वाज फैब। सो डायरेक्टर्स तो ये सोचते होंगे तब कि मतलब फिल्म हिट हो ना हो, आप हिट की गारंटी, बिकॉज गाने बड़े अच्छे और आप उसमें हैं। आप क्या सोचते हैं? लकीली मुझे म्यूजिक ऑलवेज अच्छा मिला, मुझे गाने हर वक्त अच्छे मिले और जो आज तक रेलिवेंट है। बल्कि लोग परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं, आपकी अवार्ड विनिंग फिल्म्स भूल जाते हैं, लेकिन हाँ, गाने हर जनरेशन तक आई थिंक जीवित रहते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज आई हैव बीन लकी विद। रुचि, आपने तो जैसे मैंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी लिखने के दौरान ही डिसाइड कर लिया होगा कि रवीना मैम के साथ काम करना है। पहले गिल्टी में भी आपने एक आई थी कि हनुमान दाम, सॉरी, उसमें भी रवीना टंडन मैम की हमने आवाज सुनी। तो यस, तभी डिसाइड किया था या बाद में? नहीं, बाद में एक्चुअली जब मैंने रिवेंज बाय एबीसी स्टूडियोज देखी, दैट वाज आल्सो 10-12 साल पहले। उसी वक्त मुझे लगा कि ये शो बनानी चाहिए फॉर द इंडियन ऑडियंसेस, बिकॉज इट्स आइडियल कंटेंट, इट मैचेस विद आवर ईथॉस, एंड अगर इंडिया में ये सेट होगी तो आई फील इट विल बी वेरी मच रिचर। सो एंड who else would play that character better than Raveena Tandon? Because she has the power, like inherently she has the power. She also has the ability to make it a very rooted Indian character. And of course, she's drop dead gorgeous. Absolutely. Which is one of the main things about the character, that the older woman in the show is the one who's the bombshell, which you never see otherwise. Absolutely. And that was such a revolutionary thing, which I thought only she can really pull off. And of course she really has pulled it off. Slayed it. All can see. And most people are just like, they have their jaws. This is a second OTT like series. First was Aranyak, और उसमें भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था. She just nailed it with her character. So powerful, so fierce character she played. In fact, मैं तो कहूँगी रवीना मैम की 90s की एक्ट्रेसेस अभी हार्ड कंपटीशन दे रही हैं अभी Gen Z और Gen Y वाली एक्ट्रेसेस को, नो? I think it's the experience also to that counts. So many years of experience. It just helps you hone your skill. And I think even आज की actresses, पर मैं बोलूँगी they are much more better evolved than we took time. हमको हम फर्स्ट फिल्म से लेके 25वीं फिल्म में फाइनली हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करते थे, जो आजकल के बच्चे एक्चुअली अपनी 5th या 6th फिल्म में
बहुत बढ़िया performance दे देते हैं. So I think it's every generation surpasses you by leaps and bounds. बट वन थिंग जैसे आपने बोला भी, अभी मौका ज्यादा मिल रहा है आई थिंक ओटीटी के आने से, या इस तरह की स्टोरीज लिखी जा रही है. पहले वो नहीं होता था. पहले ग्लैमर या तो शो किया जाता था, या फीमेल्स वर प्लेस्ड दैट वे कि उनका वो गॉर्जियस साइड दिखता था, बट वो पावरफुल रोल्स कहीं ना कहीं मिस होते थे. जी, that's true. तो आई थिंक वो ज्यादातर उस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, गानों पे, ब्यूटी पे, ब्यूटी शॉट्स पे. बट नाउ आई थिंक जब से, आई थिंक फ्रॉम द एडवेंट ऑफ 2000s, कहीं ना कहीं एक फ्यूजन बिटवीन रियलिस्टिक सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा बढ़ चुकी थी. And that's when I think a lot many more people even experimented with their roles, and so did I. Whether I did Satta, Daman, Shul, Jago, Matra, Daman. I did all these films, Ghulam-e-Mustafa, and Aks, of course, which had award-winning performances for me, even though the role was ultra glamorous. But nonetheless, it was Daman won the national award, Shul won the national award. So it was something that was which I was trying to gap bridge करने के लिए कि commercially acclaimed actresses also can be touted having good performances ahead. So I think that kind of made the shift for me and got me to do again performances like Aranyak or KGF 2 and of course Karmma Calling. और उसको हैंड टू हैंड ऑडियंस ने लिया भी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. इवन इसके बारे में बात भी करना चाहती हूँ. तब जब ये आया था शो रिवेंज, जिसका भी ये हिंदी अडेप्टेशन कह लें हम इसे, तब सोशल मीडिया उतना नहीं था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था डेकेड बिफोर अगर मैं बात करती हूँ. तो अब में क्या डिफरेंस, आप मतलब इंडियन ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी आपको भी, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा एक हॉलीवुड शो को हिंदी में अडेप्ट करना. So what was? I mean, I would say I see it more as an Indian adaptation because it's beyond language. Like there's an ethos, there's a culture which we have, which is Indian, which is infused into the show now. And the way we think, the diversity, the celebratory nature of Indians. The kind of relationships we have with each other within the family also. So all that has gone into different layers in the adaptation. And I also feel it was very exciting to because you have people recognized, as you were saying, for their glamour, and then to prove themselves as actors, they have to do very different kinds of roles, which were at that time called de-glamorized roles. So it was almost like either you're glamorous or you're acting. Yeah, that's true. Like with Indrani Kothari, you're doing both. Like, who says if you're not glamorous, you're not acting, you don't have a role, you're not a powerful person, you don't have layers. So I feel this is also another presentation of being able to have a woman embrace even her looks and have so many layers in her character. I agree. Totally agree with her. Achha, how many times a female has directed you, and any difference does that make when you have a female director on your side? Well, I think the first time I did a film with a woman director was Kalpana Lajmi ji, which I did Daman with. And now, of course, Ruchi Narain, who's also a very dear friend. And yes, there is always a comfort zone, like how men have a men-to-men bonding. There's definitely a woman-to-woman bonding, and there's an emotional connect also, because women, I do agree, are a little more emotional for sure, hormonally as well. So it's scientifically as well. Yes. But nonetheless, I think I totally agree with her that it was that either you were glamorous or you were a good actor. It was either or, you couldn't be both. But like I said, from the year 2000 onwards, that kind of started becoming, kind of fusing somewhere, that even realistic cinema could become commercial success, and commercial successes also could have great performances. So it's not, it kind of all fused into one, and that became a great scenario for the Indian film industry. But if I talk about you specifically or some other actresses in the 90s, they were actually a full package of glamour as well as great actors that we had in the 90s, and that's why they are giving a good competition to all the other actors of today's time, right? But I feel somehow the credit of that didn't
get fully recognized. तो आज And आज चला now, जाएगा ऐसे interview के now बाद. Now it it's is, getting and it recognized. is, and it will. Yeah. Yes. And the fact is, I feel सबके लिए जगह है हमारी इंडस्ट्री में. To be very honest, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये रूल करेंगे या वो रूल करेंगे. I think आज with the advent of OTT platforms and the kind of cinema and the kind of movies that we're making, whether they're for OTT or they're for theatrical, I think आज हर एक एक्टर के लिए जगह है who is Yes. talented, hardworking, sincere and honest with their work, and that little bit of luck, then nothing can stop you. Absolutely. वैसे who all are your last dial numbers on your phones? कौन रहते हैं last dial आपके Anil. generally? For me, it's my daughter's name. Oh wow. And for you? For me, it's my mum and Anil. अरे वाह क्या बात है. So इसमें एक लाइन है what goes around comes around. How much do you believe in that कि जैसा हम करते हैं वैसा ही भरना I पड़ता है? very strongly believe in karma and dharma. I really believe what you put out into the universe somehow, takes that whole circle and comes back to you for sure. I'm a strong believer. And I'm not just a strong believer, I hope that it happens. Oh. Yeah, I hope that there is karma and it hits Yeah, back those people I'm who they really deserve. banking on karma. And you don't have to keep your fingers crossed because it is definitely going to, because छुट्टी वाला दिन है हमारा, हम सब binge watch करने ही वाले हैं ना. That's Definitely. so good. So 26 जनवरी जैसे आप जानते हैं कर्मा कॉलिंग इज ड्रॉपिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो प्लीज देखना ना भूलिएगा. हम लोग सब आपके फीडबैक के लिए इंतजार करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much both of you. मतलब आपने मेरी शाम बना दी है आज, दिन बना दिया कहते हैं वैसे. Well, thank you so much and all the very very best to you for Thank you. Karma. We need it. We Thank need it. you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमेशा मुझे तो एक्चुअली झेलने के लिए. थैंक यू एंड अगली बार मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में. तब तक कीप वॉचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. बाय बाय फॉर नाउ.